गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है CTBT। तो इसका मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रशिया ने इंडिकेट किया है कि वो जो उन्होंने रेटिफाई की है CTBT उसको वो रिवोक करने वाले हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि वो न्यूक्लियर टेस्टिंग को रिज्यूम करना चाहते हैं। तो रशिया जो है वो अपनी इस CTBT की रेटिफिकेशन को रिवोक करेगा। और वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यूएस ने तो जो है साइन तो किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है इस ट्रीटी को। इसीलिए जो है वो रशिया चाहता है कि वो भी अब जो है इस रेटिफिकेशन को रिवोक करे। अब CTBT है क्या? ये न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट जो है किसी या एक्सप्लोजन, कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बेसिकली वर्ल्ड वाइड उसको प्रोहिबिट करता है। ये ट्रीटी जो है 1996 में जो है सिग्नेचर के लिए ओपन हुआ था। 187 नेशंस ने इसको जो है वो साइन कर लिया है और रेटिफाई इसको 178 नेशंस ने किया है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इसराइल, ईरान, इजिप्ट और यूएस ने इसको रेटिफाई नहीं किया है। अब ये ट्रीटी एक एस्टैब्लिश करती है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मॉनिटरिंग फैसिलिटीज़, जिससे कि ऑन साइट इंस्पेक्शंस भी की जा सकती हैं सस्पिशियस इवेंट्स की। CTBT जो है वो फॉर्मली अभी तक इन्फोर्स नहीं किया गया है, क्योंकि इसका जो प्राइमरी गोल है एंडिंग न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन्स, वो अचीव कर लिया गया है। अब ये CTBT कैसे जो है वो सामने आया, ये देख लेते हैं। 1945 से लेके 1996 के बीच लगभग 2000 न्यूक्लियर टेस्ट जो हैं वो कैरी आउट किए गए थे, मोस्टली जो है यूएस और रशिया द्वारा, मतलब उस टाइम पर सोवियत यूनियन था। तो इसका जो रेडियो एक्टिव फॉल आउट था उससे जो है वर्ल्ड वाइड क्रिटिसिज्म जो है वो ड्रॉ किया गया। तो 1963 में लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो है वो साइन की गई, जिसमें कि एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस और अंडर वाटर जो है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग को प्रोहिबिट कर दिया गया, लेकिन फिर भी अंडरग्राउंड टेस्टिंग उसमें अलाउड थी। इसीलिए जब कोल्ड वॉर एंड हुआ 1990 में, तो उसके बाद जब डिसइंटीग्रेशन हो गया सोवियत यूनियन का, तब जो है ये CTBT को जो है एक तरह से नेगोशिएट किया गया। यूएन ने इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेते हुए CTBT को, जियोपॉलिटिकल टेंशंस को जो है वो सिमर डाउन करने के लिए CTBT को अडॉप्ट करवाया। अब CTBT से क्या न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है वो बंद हो गई है? नहीं। CTBT के बाद भी 10 न्यूक्लियर टेस्ट हुए, उसमें से 2 तो इंडिया ने ही किए हैं 1998 में, फिर पाकिस्तान ने भी किए हैं और नॉर्थ कोरिया ने भी किए हैं। ठीक है। अब इंडिया क्यों नहीं साइन करता है CTBT? जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने पहले तो कहा था कि न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, उस पर एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करना चाहिए यूएस और सोवियत यूनियन को। 1954 में ही ये कहा गया था, लेकिन इस कॉल को जो है वो रोक लिया गया न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स द्वारा, खासकर यूएस और सोवियत यूनियन दोनों द्वारा। और उसके बाद जब चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया 1964 में और बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी अटेन कर ली, और 1971 में जब वॉर में इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न सामने आए, तब इंडिया को ये रियलाइज़ हुआ कि जो ये आइडियल सिचुएशन है वो फीजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए इंडिया ने जो है खुद को भी जो है न्यूक्लियर कैपेबल बनाया। और इंडिया इसलिए उसको साइन नहीं करता है CTBT को, क्योंकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के कंसिडरेशंस हैं। न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो एक डेटरेंट है हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स को, खासकर पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट। इंडिया लेकिन ये कहता है कि हाँ, हम इक्विटेबल और यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स बाकी कंट्रीज़ भी इसको जो है अगर अडॉप्ट करें तो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। RBI ने रिसेंटली प्रपोज किया है कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। तो कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन क्या होता है? बेसिकली आपके एक्चुअल जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल्स है उसको टोकन से रिप्लेस कर देना। ठीक है। तो अभी जब आप कभी कोई शॉपिंग करते हो या कुछ भी आप परचेज़ करते हो, तो आपके जो कार्ड नंबर है वो स्टोर कर लिया जाता है ना, जो भी पेमेंट एग्रीगेटर होता है या जो ई-कॉमर्स पार्टनर होता है। तो उसकी बजाय, आपके कार्ड नंबर की बजाय एक टोकन, एक मतलब कोई और नंबर, अगर आपके कार्ड का नंबर 12345 है तो उसके बजाय एक कोई रैंडम टोकन नंबर 56789 ऐसा कुछ जो है वो सेव कर लिया जाए, जो कि बेसिकली आपके कार्ड की एक आइडेंटिटी हो कि ये जो टोकन नंबर है वो उस पर्टिकुलर कार्ड से जो है वो एसोसिएटेड है, ताकि अगर कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाए कार्ड डिटेल्स किसी फॉर्म में, तो जो है वो सिर्फ टोकन नंबर ही कॉम्प्रोमाइज़ होए और जो कार्ड है डिटेल्स, वो एक्चुअल कार्ड डिटेल्स जो है वो सेफ रहें। ठीक है। इसीलिए ये टोकनाइजेशन की जा रही है।
तो इसके एडवांटेजेस भी यही हैं, सेफ़ रहेगा ये, कार्ड डिटेल्स जो हैं वो कभी शेयर नहीं होंगी मर्चेंट के साथ भी। इवन जब आप ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस करोगे तो जो आपने जिससे परचेज़ किया है उसके पास भी एक्चुअल आपके कार्ड डिटेल्स नहीं जाएंगी, ठीक है। तो कार्ड ऑन फाइल ट्रांजैक्शन जो है आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन को सिक्योरली स्टोर करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सुगम आरईसी ऐप। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आरईसी लिमिटेड एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इन्होंने सुगम आरईसी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। ये एप्लीकेशन करंट और फ्यूचर इन्वेस्टर्स जो हैं उनको 54 ईसी कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन बॉन्ड के बारे में डिटेल्स देगी, ठीक है। वो अपने ई बॉन्ड सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कर पाएंगे, फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, केवाईसी जो है फॉर्म्स अपडेट कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे, एट्सेट्रा। अब 54 ईसी बॉन्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये कैपिटल गेन बॉन्ड्स होते हैं जो कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, और ये एक असेसी या इन्वेस्टर को अलाउ करते हैं कि वो अपना इनकम टैक्स बचा सके ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाय इन्वेस्टिंग द गेन्स, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो इसमें होती है इन बॉन्ड्स में, उसको विद इन 6 मंथ्स करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इनका फिक्स्ड लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का। इनको फिजिकल या डीमैट फॉर्म किसी भी फॉर्म में जो है होल्ड किया जा सकता है। इसका नाम 54 ईसी इसलिए होता है क्योंकि जो इनकम टैक्स एक्ट का 54 ईसी सेक्शन है वो टैक्सेबिलिटी बेनिफिट्स देता है इन बॉन्ड्स को अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो आरईसी लिमिटेड एक महारत्ना कंपनी है। एनबीएफसी की तरह इसको आरबीआई में रजिस्टर किया गया है। 1969 में इनकॉर्पोरेट किया गया था जब सिवियर ड्रॉट और फेमिन जो है हमारी कंट्री में आई थी। तो हमने एग्रीकल्चरल पंप सेट्स को इरिगेशन पर्पसेस के लिए एनर्जाइज करने के लिए इसको बनाया था। ये लॉन्ग टर्म लोन्स और अदर फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स भी देती है स्टेट, सेंटर और प्राइवेट कंपनीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के जनरल कॉन्फ्रेंस में, थर्ड सक्सेसिव टर्म में। तो ये AIBD एक्चुअली। तो AIBD जो है वो 1977 में इस्टेब्लिश किया गया था यूनेस्को द्वारा। 92 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसकी, और इसको अलग अलग रीजन्स जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं, एशिया पैसिफिक, यूरोप, अफ्रीका, अरब स्टेट्स और नॉर्थ अमेरिका। और इंडिया इसका वन ऑफ द फाउंडिंग इंडिया इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है। प्रसार भारती जो है वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है इंडिया की AIBD में, ठीक है। तो प्रसार भारती आपको पता है एक स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है। 1997 में इसको प्रसार भारती एक्ट के अंदर बनाया गया है। दूरदर्शन टेलीविज़न नेटवर्क और ऑल इंडिया रेडियो को जो है ये कंप्राइज करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेक्शन 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट जो है वो इनहेरेंटली इम्पोज नहीं किया जाएगा, इनहेरेंटली इम्पोज नहीं करता है बर्डन किसी भी अक्यूज़ के ऊपर। बस वो तभी पिक्चर में आता है जब कोई भी अक्यूज़ एक्सप्लेनेशन जो है रिगार्डिंग फैक्ट्स देने से मना कर देता है या फिर फेल हो जाता है, ठीक है। तो सेक्शन 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ कुछ ऐसे केसेस में जिसमें उसी पर्सन के पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज है या उस पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में उसी पर्सन को पता है या उसी अक्यूज को पता है, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसको ही साबित करना पड़ेगा, ठीक है। समझ लो इसको आप सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों में ही जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। समझ लो किसी की कोई अगर क्लेम कर रहा है केस करके कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी है, तो उसको ही पता है कि उसने ऑफ कोर्स ये प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर की है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उसी पर्सन के ऊपर आ जाता है कि उसको ही प्रूव करना है कोर्ट के अंदर कि सेक्शन 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कि ये पर्टिकुलर फैक्ट आपको ही पता है, तो आप ही प्रूव करोगे कि आपने ये प्रॉपर्टी जो एक्वायर की तो ये कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो नहीं थी, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, ये सिर्फ आपको सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि जो है कितना आपको जो है अपनी स्पेशल नॉलेज बतानी है उस पर्टिकुलर या फैक्ट्स बताने हैं जिससे कि आप प्रूव कर सको कि जो आप कोर्ट में कह रहे हो वो सच है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये टॉपिक भी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने रिसेंटली पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है।
तो पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम जो है 2021 में 3 साल के लिए लॉन्च की गई थी। इसका मोटिव ये था कि नंबर ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेस जो है कंट्री में उसको बढ़ाया जा सके। तो पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को टीयर 3 से टीयर 6 सिटीज़ के बीच में और ख़ासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में जो है फैलाया जा सके। इसको फंड कौन कर रहा था, कौन कर रहा है? आरबीआई और मेजर ऑथोराइज्ड कार्ड नेटवर्क्स। ये स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है बैंक्स को और एनबीएफसीज को डिप्लॉयमेंट ऑफ पीओएस टर्मिनल्स के लिए और एलिजिबल रीजन्स में। अगर हम इसकी एलोकेशन देखें तो जो मर्चेंट्स होते हैं, जैसे कि जो आपके एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट पेमेंट्स, फ्यूल पंप्स, पीडीएस शॉप्स, हेल्थ केयर, किराना शॉप्स, उनको जो है ये फिजिकल और डिजिटल एक्सेप्टेंस डिवाइसेस दिए जाते हैं। और ये जो स्कीम है इसको एडवाइजरी काउंसिल द्वारा गवर्न किया जा रहा है और मैनेज और एडमिनिस्टर किया जा रहा है आरबीआई द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एपैप मिशन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा जो है वो एक मिशन को लॉन्च कर रहा है एपैप, जो कि ये स्टडी करेगा कि सोलर इक्लिप्स जो है हमारे अपर एटमॉस्फेयर को कैसे अफेक्ट करता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा एपैप का? एटमॉस्फेरिक पर्ट्यूबरेशंस अराउंड द एक्लिप्स पाथ मिशन। ओके, तो एपैप मिशन जो है ये देखेगा कि अपर एटमॉस्फेयर में क्या चेंज आता है जब सोलर इक्लिप्स होता है, खासकर जब एकदम से रिडक्शन ऑफ लाइट हो जाती है सोलर इक्लिप्स के टाइम पर। तो ये सडन ड्रॉप इन सनलाइट जो है इससे क्या आयोनोस्फेयर में चेंजेस आते हैं, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में, डेंसिटी में, टेम्परेचर में क्या चेंजेस आते हैं, इसको मेजर किया जाएगा। ठीक है, एज पर नासा आयोनोस्फेयर का जो टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों ही जो है वो डिक्रीज हो जाती हैं ड्यूरिंग एक्लिप्स, और एक वेव लाइक डिस्टर्बेंस उससे क्रिएट होती है, जिससे कि हमारे जीपीएस डिसरप्ट हो जाता है और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस भी डिसरप्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया एक मेजर प्रोग्राम लॉन्च करने वाला है, नेशनल लेवल फ्रेमवर्क टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग क्लाइमेट सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन। इसको स्पेयर हेड कौन करेगा? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और अगर हम देखें तो ये GFCS ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज के ऊपर ही बेस्ड होगा। तो ये GFCS जो है इसको 2009 में जिनीवा में कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, थर्ड वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, तब इसको लॉन्च किया गया था। बेसिकली एक पार्टनरशिप है गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस की ग्लोबल लेवल पर कि क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज को कैसे जो है प्रोड्यूस करके शेयर किया जाए आपस में। तो रिसर्चर्स और यूज़र जो होते हैं क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज के, वो आपस में आते हैं और एक इंटरनेशनल डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, हाई क्वालिटी डेटा, जिसमें कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल मॉइस्चर, ओशन कंडीशंस और भी बाकी के जो है वेदर पैरामीटर्स को का डेटा स्टोर किया जा रहा है, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल एवरेजेस जो हैं पैरामीटर्स की निकाल सकें। तो अगर हम देखें एन एफ सी एस भी जो है एक नेशनल लेवल पर होगा, जैसे जो GFCS जो है वो ग्लोबल लेवल पर है, NFCS नेशनल लेवल पर होगा। कंट्री स्पेसिफिक वेदर और स्टेक होल्डर डेटा जो है वो जो है नीड्स के लिए जो डेटा चाहिए वो जनरेट करेगा। अब इसकी जो नोडल एजेंसी है उसको IMD ही रखा गया है, और ये हाइड्रोलॉजिकल, पावर, रीन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, डैम्स एंड इरिगेशन, हेल्थ एजेंसीज जो हैं ये सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, जो कि क्लाइमेट सर्विसेज का डेटा जनरेट करेंगी, ताकि हम भी जो है फ्यूचर में लॉन्ग टर्म एवरेज जो है डेटा, क्लाइमेटोलॉजिकल डेटा जो है वो जनरेट कर सकें। ठीक है, अब इसकी क्यों ज़रूरत है? क्योंकि बहुत से गैप्स हैं हमारे टेरेन्स और सीज़ में जहाँ पर कोई भी वेदर डेटा अवेलेबल ही नहीं होता है। एक लॉन्ग टर्म क्लाइमेटोलॉजिकल डेटा खासकर हिमालयन रीजन्स का हमें और ओशंस का जो है वो जनरेट करने की ज़रूरत है, इससे कि हम अपने फ्यूचर में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हेल्थ ट्रेंड्स, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हाई रिस्क एरियाज़ में उन सबको जो है रेगुलेट कर पाएंगे। अब इंडिया अकेली ऐसी कंट्री तो नहीं है कि जो इस नेशनल लेवल पर ये NFCS बना रही है। ऑफ कोर्स स्विट्ज़रलैंड, चाइना, जर्मनी, UK, इन सब ने ही जो है अपना अपना NFCS ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, or the CTBT. So this topic is important for your international relations. So Russia has indicated that it is moving swiftly towards revoking the ratification of CTBT. So Russia is saying that because US has not signed, the US has signed it but not ratified it, that's why we cannot also be compelled to keep the ratification of CTBT intact.
So because Russia wants to resume nuclear testing, that's why they are revoking this ratification. So what is this CTBT? Basically, it prohibits any nuclear weapon test, explosion, or any other nuclear explosion anywhere in the world. It was opened for signature in September 1996, and it has been signed by 187 countries and ratified by 178 countries. So far, India, China, Pakistan, North Korea, Israel, Iran, Egypt, and USA have not ratified this treaty. So, this treaty has also established a global network of monitoring facilities which would allow for on site inspections of suspicious events. CTBT may not have formally entered into force as of now, but it has achieved its primary goal, that is, ending nuclear weapon test explosions. So, how did it come into being? So, between 1945 and 1996, more than 2000 nuclear tests were carried out by US and Soviet Union. So, the radioactive fallout from those tests drew criticism from around the globe. So, as a result, in 1963, limited nuclear test ban treaty was signed, but it only prohibited nuclear testing in the atmosphere, outer space, and underwater, but it did not prohibit underground tests. So, a major breakthrough regarding a total ban was only achieved after the dissolution of Soviet Union, and around 1990, when the United Nations realized that to fuse the geopolitical tensions, we should adopt this CTBT now to put a blanket ban on explosive testing of nuclear weapons. So, did CTBT stop nuclear testing? No, of course. Since CTBT, 10 nuclear tests have taken place. India has also conducted two in 1998, Pakistan also, and since then, North Korea has been conducting it in several years. Okay, US last tested this nuclear weapon in 1992, China and France in 1996, and Soviet Union in 1990. Why has India refused to sign this CTBT? Because initially Jawaharlal Nehru ji made the call for an immediate standstill agreement regarding nuclear testing between US and Soviet Union in 1954, but this was sabotaged by nuclear weapon states, that is the US and Soviet Union, on the ground that it was difficult to evolve a foolproof verification system. So after that, Chinese also conducted their nuclear test, and India realized that in 1971 war, the dynamics would have been different, and if India was a nuclear powered country like China. Okay, so India has uh, India has its own stance on CTBT. We have this stance based on our national security considerations. We view this nuclear weapons as a deterrence against potential security threats from our adversaries, but mainly Pakistan and China. And India's decision is also rooted in its desire for equitable and universal nuclear disarmament. Okay, so the next topic is card on file tokenization. This topic is important for your economy section. So recently RBI has proposed to introduce card on file tokenization, which would basically replace the actual credit and debit card details with a token number. Okay, so like I was telling you earlier, that whenever you go for shopping on e-commerce platforms or anywhere for that matter, they store your card details. Okay, so in case of any cyber attack on their servers, your card details would get compromised. Instead of that, why not share only tokens? Okay, for example, if you have your card number 1234, when you would be storing it in any of the portal from where you are going to shop, the portal would automatically convert, or rather your bank would automatically convert that card number into a token number, let's say 8954, and this would be stored at the e-commerce platform from where you are shopping, and this token would basically be an identification of your actual card number, which would only be stored with the bank company or the card issuer. Okay, so even in case if the e-commerce platform where you generally shop, it gets compromised in a cybersecurity attack, the actual card details would not be revealed. Okay, so this is considered safer as the actual card details are not shared with the merchant during transaction processing. Okay, so it is basically card on file transaction is basically a transaction wherein card holders authorize merchants to store their payment information securely and bill card holders stored accounts for future purchases. Okay, so on when we are making card on file transactions, tokenization would be immensely helpful.
So the next topic is Sugam REC app. This topic is important for your governance section and economy section both. So REC Limited, that is Maharatna Central Public Sector Enterprise, they have launched this Sugam REC mobile application, which is exclusively built for current and future investors of REC's 54EC capital gain tax exemption bonds. So these investors would be able to now download their e-bond certificates, apply for fresh investment, download important forms related to updating the KYC, and also connect with REC's investor cell. Okay, so what are these 54 EC bonds? So basically these are known as capital gain bonds, and they are fixed income instruments. They allow an assessee or an investor to save income tax on long term capital gain. You know that otherwise you are taxed at 10%. For example, if you sell your property, whatever gain you have made over the selling of the property is taxed at 10%. It is also called long term capital gain tax. To prevent that, the gain can be invested into these bonds within 6 months from the date of long term capital gain that you have realized. So these will be a fixed this will have a fixed lock in period of 5 years. And why is it called 54 EC bonds? Because under the Income Tax Act, 54 EC section basically talks about the taxability of benefit of these bonds. So what is REC Limited? It's a Maharatna company under Ministry of Power, and it's registered as an NBFC under with RBI, and it was incorporated in 1969 as we suffered from severe drought and famine, and to energize agricultural pump sets for irrigation purposes. This REC Limited was formed. It also provides long-term loans and other financing products to state, center, and private companies for creation of infrastructure assets in the country. So the next topic is Asia Pacific Institute for Broadcasting Development. This topic is important for your international relations. India has been elected as the president of Asia Pacific Institute for Broadcasting Development, that is AIBD, in the General Conference for the third successive term. So it was established in 1977 under the auspices of UNESCO. AIBD currently has 92 member organizations from across 44 countries, and these 44 affiliates are represented by 28 countries and regions in Asia Pacific, Europe, Africa, Arab states, and North America. India is one of the founding members of this organization, and it is represented by Prasar Bharati, which is the representative body of India at AIBD. So, what is Prasar Bharati? It's a statutory autonomous body which was established in 1997 under the Prasar Bharati Act. It comprises of Doordarshan Television Network and All India Radio. So the next topic is Section 106 of the Indian Evidence Act. This topic is important for your governance section. So Supreme Court has recently held that Section 106 of the Evidence Act does not inherently impose a burden on the accused, but it only comes into picture when the accused has failed to provide any explanation regarding the facts that is within his or her knowledge. So as per Indian Evidence Act, the burden of proof in cases where the fact is only known by that person lies on that person only. Okay, so it applies to civil and criminal cases. So for example, if I have taken a case into the court of law regarding the ownership of my property, only I would be knowing how I acquired that property. So in that case, the burden of proof under Section 106 of the Indian Evidence Act would lie on me. Okay, so if a fact is known only to a particular person and not to others, it is the responsibility of that person to provide it in court. That is what Section 106 of Indian Evidence Act says. Okay, so this burden of proof is not also absolute, and the person who has this special knowledge of the fact is only required to prove it to the extent which is reasonable. Okay, you do not need to reveal all the information, but only that information which is relevant and which proves the point that you are making in the court. Okay. So the next topic is Payments Infrastructure Development Fund. This topic is important for your economy section. RBI has recently extended the Payments Infrastructure Development Fund scheme by another 2 years. So this scheme was launched by RBI in January 2021 for a period of 3 years, and it
aims to increase the number of payment acceptance devices in the country, and uh, to facilitate the development of payment acceptance infrastructure in tier 3 to tier 6 cities and even the northeastern states of India. Okay, so this is funded by RBI and major authorized card networks in India, and this scheme provides financial assistance to bank and NBFCs for deployment of POS terminals and other payment infrastructure in eligible regions. So the primary objective of this scheme is to identify and assist merchants who have not yet adopted payment acceptance technology. So these merchants will be eligible to receive one physical and one digital acceptance devices. So basically, who are these merchants? Who are providing essential services: fuel pumps, PDS shops, healthcare, kirana shops, street vendors, etc. Okay, so this PIDF is governed by an by an advisory council, which is managed and administered by the RBI. So the next topic is APAP mission. This topic is important for your science and tech section. So NASA is set to launch a mission called APAP to study how a solar eclipse affects the upper atmosphere. So this is atmospheric perturbations and around the eclipse path mission, and the aim of this mission is to know how the upper atmosphere will change during the eclipse, especially the moment when there is a sudden reduction of light. So during this eclipse, there is sudden drop in sunlight. It causes changes in the ionosphere, and that's why this APEP mission will measure these changes in electric and magnetic fields, density and temperature. So as per NASA, ionosphere's temperature and density both are get decreased during the eclipse, and this results in a wave-like disturbance which potentially disturbs the GPS and other satellite communications. Okay. So the next topic is National Framework for Climate Services. This topic is important for your environment section. So India is embarking on a major program to launch its maiden national level framework towards providing climate services and information, and it is supposed to be spearheaded by the IMD, that is the Indian Meteorological Department. So it is designed on the Global Framework for Climate Services, which was launched in the Third World Climate Conference, which was held in Geneva in 2009. And GFCS is basically a partnership of governments and organizations at a global level to produce the climate information and services, which would facilitate researchers and users of climate information and services, so that this high quality data from national and international databases, basically on the temperature, rainfall, wind, soil moisture, and ocean conditions, would help to create long term historical averages of these parameters. Okay, so this is similar. This NFCS would be similar to the GFCS, but this NFCS would be based on the country specific data. Okay, so the nodal agency would be IMD, and this would uh, take up the data on hydrological power, renewable energy, transport, dam and irrigation. Even health agencies would be asked to share the data, and this would be very helpful. And why is it needed? Because currently there are many gaps across many terrains and the seas, wherein we do not have any weather data available. If there is also lack of long-term climatological data from the Himalayan regions, the oceans, and we have to gather this data so that we can create long-term averages, and which would help us to identify agriculture production, health trends, population distribution in these high risk areas, and that's how we would be able to make future decisions. Okay, so India is not the first country who would be making this NCFS. Rather, Switzerland, China, Germany, and UK have already launched their versions of NFCS. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.